Hello everyone, very warm welcome to DMG chemistry classes, and in today's video I am going to discuss an experiment related to thermochemistry or calorimetry, and the experiment is determine the water equivalent of given calorimeter. But before coming on to this experiment, let us quickly recapitulate what is thermochemistry, because I have discussed it in one of my previous videos in detail. And there I told you that thermochemistry is the branch of chemistry which deals with or which measures the heat evolved or absorbed during various physical or chemical changes. थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसी भी फिजिकल चेंज और या केमिकल चेंज में जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको मेज़र करती है. And we also discussed that the reactions in which heat is evolved are called as exothermic reactions, and the reactions in which heat is absorbed are called as endothermic reactions. I also told you in that video that heat evolved or absorbed at constant volume is equal to the change in its internal energy, that is delta U, and heat evolved or absorbed at constant pressure is equal to the change in the enthalpy, that is delta H. And I will share the link of that video in the description box. Now, as we know that majority of the physical or the chemical changes are studied open to atmosphere. This means that all those changes are occurring at constant pressure, and the pressure is held constant equal to the atmospheric pressure. This means that heat changes or enthalpy changes or heat evolved or absorbed in those changes will be equal to the enthalpy change, as these changes are occurring under constant pressure. Okay, and I also discussed in my previous videos enthalpy changes during various reactions. I discussed the enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization. So let us quickly recapitulate one or two terms. Okay, so I am discussing here enthalpy of formation. Enthalpy of formation. So enthalpy of formation is the enthalpy change or heat evolved or absorbed. Okay, when 1 mole of a compound is formed from its elements under standard conditions. For example, let us understand it with an example. So in this reaction, one mole of carbon dioxide is being formed from its elements. इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है इसके एलिमेंट्स से. क्या क्या है इसके एलिमेंट्स? इसके एलिमेंट्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन. ओके, सो हेयर 1 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, एंड द enthalpy change or the heat evolved in this reaction is equal to minus 394 kilojoules per mole. Okay, so this is the enthalpy of formation of carbon dioxide, and this is under standard conditions. A substance is said to be in standard state or under standard conditions if its temperature is 25 degrees Celsius and pressure is equal to 1 atmospheric. Okay, so this reaction represents the enthalpy of formation of carbon dioxide. And we also know the heat of combustion or enthalpy change of combustion, and it is the enthalpy change when 1 mole of a compound undergoes complete combustion in excess supply of oxygen under standard conditions. जब किसी भी कंपाउंड का 1 मोल एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में वर्न करेगा तो हमें जो हीट मिलेगी या जो इंथाल्पी चेंज होगा उसे हम क्या बोलते हैं? इंथाल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं. Here 1 mole of your methane is burning in the presence of excess supply of oxygen and giving us 1 mole of carbon dioxide
2 moles of water, okay, and the heat evolved or enthalpy change of this reaction is equal to 890 kilojoules per mole. Okay, so this is the enthalpy of combustion of methane. And in my upcoming videos I will discuss enthalpy of solution and enthalpy of neutralization in detail, because we will study the experiments with which we can determine the heat of solution and the heat of neutralization. So keep watching my videos and don't forget to like and share my videos. So this is a brief idea about the enthalpy changes in different types of chemical reactions. Now how do we measure the enthalpy change of a chemical reaction? How do we measure the heat evolved or absorbed in a chemical or physical change? So friends, the enthalpy change of a chemical reaction or a physical change is measured with the help of a well insulated copper vessel, which is called as calorimeter. So here I have tried to represent the calorimeter diagrammatically. So let us understand its component. So calorimeter have a metallic vessel inside it, and this metallic vessel is made up of copper. Okay, so बिल्कुल इसके अंदर सब एक copper vessel होगा, ठीक है, और that copper vessel will be surrounded by a insulated double ball jacket. तो यहाँ पर ये हमारा कॉपर वेसल है और इसके बाहर ये एक डबल वॉल्ड इंसुलेटेड जैकेट होगी जो इसको प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है. एंड देन दिस डबल बॉल जैकेट विल बी कवर्ड बाय ए आउटर वुडन जैकेट, और इसके बाहर हमारे पास एक वुडन जैकेट होगा, लकड़ी की एक जैकेट होगी जो, और इस तरह से जो कॉपर वेसल है इट विल बी प्रॉपरली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ओके, देन इट विल हैव अ लिड, इसका एक कवर भी होगा, एंड दैट लिड विल हैव 2 होल्स, एंड 1 होल विल बी फॉर द इंसर्शन ऑफ थर्मोमीटर, मतलब एक होल से हम लोग थर्मोमीटर डालेंगे, एंड द सेकेंड होल विल बी फॉर द स्टरर, और सेकेंड होल से इसमें स्टरर जाएगा, ठीक है, टू स्टर द मिक्सचर. So this is the diagrammatic representation of the calorimeter. Okay, now friends, here I want to tell you that whenever a reaction is carried out inside this calorimeter, then the heat evolved during that reaction is also absorbed by the calorimeter. जब भी हम कोई रिएक्शन, चाहे कोई कंबशन रिएक्शन या कोई सॉल्यूशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग करवाएंगे कैलोरीमीटर के अंदर, तो उस रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होगी वो उस हीट को कैलोरीमीटर भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. इसलिए वी कैन डिफाइन द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर ऑल्सो. सो द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द कैलोरीमीटर to increase its temperature by 1 degree Celsius. Now question arises that how do we measure the heat absorbed by the calorimeter? हम जो कैलोरीमीटर जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको हम किस तरह से मेज़र करेंगे? So that heat absorbed is measured in terms of the water equivalent of the calorimeter. So now let us discuss what is water equivalent. Okay, so water equivalent is the amount of water in grams which absorbs the same amount of heat as absorbed by the calorimeter. मतलब ये कि जो वाटर इक्विवेलेंट है वो पानी का वो वेट है, वो अमाउंट है इन ग्राम्स जो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करता है जितना कौन करता है, कैलोरीमीटर करता है. सो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ वाटर इक्विवेलेंट है. Water equivalent, so it is the amount of water, it is the amount of
water in grams which absorbs the same amount of heat as absorbed by the calorimeter and its contents। ठीक है, तो ये होता है किसी भी कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो यही है, हमने किसी गिवन कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर which absorbs the same amount of heat as absorbed by the calorimeter. So now let us discuss this experiment in detail. So first of all, I am discussing the requirements of this experiment, and requirements are, we have to take a calorimeter with a lid, okay, lid and stirrer। कैलोरीमीटर होगा, उसमें लिड भी होगा, उसका कवर भी होगा और उसमें स्टरर भी होगा। देन वी रिक्वायर 1/10 thermometer. So what do we mean by this 1/10 thermometer? This means the thermometer in which 1 degree Celsius has been divided into 10 equal parts. Let us understand. Suppose here we have a thermometer, okay, then here we have 0 degree Celsius, then 1 degree Celsius, then 2 degree Celsius, like this, and 1 degree Celsius will be divided into 10 small divisions. Then we will have 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, then 1. So 1 degree Celsius is divided into 10 equal parts. Likewise, here we will have 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 2. Okay, and the least count of this thermometer will be equal to 1/10, that is equal to 0.1 degree Celsius. So this is what we mean by this 1/10 thermometer. Okay, we also require hot water, okay, cold water, beakers, etc. So these are the requirements of this experiment. Okay, now let us discuss the procedure of this experiment. So this experiment have two procedures, so I will discuss these procedures one by one. The first procedure is, and the first step of the first procedure is that first of all we will clean the calorimeter properly, and then we will take 50 ml of cold water in the calorimeter. तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलोरीमीटर को क्लीन कर लेंगे ढंग से और इसमें 50 ml कोल्ड वाटर हम ले लेंगे। Then we will note the temperature of the cold water and let the temperature of the cold water is equal to T1 degree Celsius. Okay, and in the second step we will heat, or we will take 50 ml of cold water in a separate beaker. Then we will heat it to 60 to 70 degree Celsius and again note its temperature. इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अलग बीकर में 50 ml वाटर लेंगे और उसको 60 टू 65 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, ठीक है, और
उसके बाद उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर नोट करेंगे। तो लेट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर इज T2 degree Celsius. Okay, then we will mix this hot water. Then we will mix this hot water immediately into the 50 ml cold water taken in the calorimeter. अब जो हॉट वाटर है उसको हम इमीडिएटली मिक्स कर देंगे, जो वाटर हमने कहाँ लिया है 50 ml कैलोरीमीटर में लिया है कोल्ड वाटर, एंड देन वी विल स्टर इट प्रॉपरली। फिर ढंग से हम लोग इसको स्टर कर लेंगे एंड आफ्टर मिक्सिंग प्रॉपरली वी विल नोट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। फिर जब इसको मिक्स कर लिया तो फिर मिक्सचर का टेम्परेचर भी हम विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर नोट करेंगे। एंड देन लेट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का जो टेम्परेचर है let it be T3 degree Celsius. So this is the first procedure to of this experiment. Okay, now we have another alternative procedure of this experiment, and in that procedure we will measure this T1, T2, T3 graphically. So let us discuss the procedure. So in the first step of that procedure also, what we do, we again take the 50 ml of distilled water inside the calorimeter. फिर इसमें भी हम जो प्रोसीजर होगा, पहला स्टेप होगा इसका, उसमें 50 ml distilled water लेंगे कैलोरीमीटर के अंदर and we will record its temperature, okay, after every 1 minute for 5 minutes. फिर हम जैसे ही इस कैलोरीमीटर में हमने 50 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, ठीक है, और हर 1 मिनट के बाद उस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर नोट करते रहेंगे फॉर 5 मिनट्स तक, 5 मिनट तक हम उसको नोट करेंगे। और यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका टाइम और यहाँ आएगा आपका टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, that is time 1 minute 2 3 4 5 and we will note the temperature of the cold water after every 1 minute. तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर्स आ जाएंगे कोल्ड वाटर के, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सम वाटर इन अ सेपरेट बीकर। फिर हम एक अलग बीकर में कुछ पानी ले लेंगे एंड वी विल हीट दैट वाटर अप टू 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, और उस पानी को हम लोग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लेंगे। मतलब हमने एक अलग से बीकर लिया, उसमें कुछ पानी ले लिया इस तरह से, और इस पानी को हमने लगभग कितना 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लिया, ठीक है। और जब हम इसको हीट कर लिया तो इस पानी में से वी विल टेक 50 ml। अब ये जो हॉट वाटर होगा इसका हम लोग कितना ले लेंगे, यहाँ से इस बीकर से 50 ml ले लेंगे इस हॉट वाटर का, एंड वी विल अगेन नोट द टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट वाटर आफ्टर एवरी मिनट फॉर 5 मिनट्स। फिर इस हॉट वाटर का भी हमने 1 मिनट के बाद टेम्परेचर नोट करते रहना है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर 5 मिनट तक। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर आ जाएगा आफ्टर एवरी 1 मिनट फॉर द 5 मिनट्स, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ये कर चुके होंगे, हॉट वाटर का टेम्परेचर हमने नोट कर लिया होगा 5 मिनट्स तक, देन वी विल इमीडिएटली मिक्स दिस हॉट वाटर, ओके, इनटू द 50 ml कोल्ड वाटर टेकन इनसाइड द कैलोरीमीटर। तो जैसे ही हो जाएगा, हॉट वाटर का टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे, उसी वक्त हम हॉट वाटर को मिक्स कर देंगे किसके अंदर, कैलोरीमीटर के अंदर जो कोल्ड वाटर है। अगेन वी विल स्टर इट प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वी विल नॉट स्टॉप द स्टॉप वॉच, हम स्टॉप वॉच को रोकेंगे नहीं। जैसे ही 5 मिनट हुए होंगे ना हॉट वाटर के टेम्परेचर को नोट करते हुए, स्टॉप वॉच रुकेगी नहीं, स्टॉप वॉच चलती रहेगी, और हम उसके बाद हम लोग हॉट वाटर को यहाँ मिक्स करेंगे,
ठीक ढंग से हम लोग उसको स्टर करेंगे, मिक्स हो जाएगा हॉट वाटर कोल्ड वाटर में, और फिर हम लोग मिक्सचर का टेम्परेचर नोट करना शुरू कर देंगे आफ्टर एवरी 1 मिनट फॉर 5 मिनट्स। फिर हमने मिक्सचर का टेम्परेचर नोट करना है। ओके, स्टॉप वॉच रुकेगी नहीं जब चली है हॉट वाटर के केस में। तो फिर हम लोग मिक्सचर का टेम्परेचर नोट करेंगे आफ्टर एवरी 1 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्सचर की जो फर्स्ट रीडिंग आएगी टेम्परेचर की, दैट रीडिंग विल बी आफ्टर 6 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट तो स्टॉप वॉच को चले हुए हो जाएंगे फॉर द हॉट वाटर, और जैसे ही 6 मिनट्स होंगे हम लोग मिक्सचर का टेम्परेचर हम लोग नोट कर लेंगे। दिस मीन्स दैट in this table temperature of the mixture, first reading of the temperature of mixture will be at after 6 minutes। तो यहाँ पे 6 मिनट्स पे एक रीडिंग आ गई मिक्सचर की, फिर एक आपकी 7 पे आएगी, फिर 8, 9 एंड 10। सो इन दिस वे वी विल रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ योर मिक्सचर ऑल्सो फॉर आफ्टर एवरी मिनट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, देन आफ्टर दिस व्हाट वी डू, वी प्लॉट ए ग्राफ। We plot a graph between time and temperature। फिर हम लोग टाइम और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड। इस तरह से so along y axis we will have temperature। Suppose here we have your 10 degree Celsius, 20, 30, likewise। Okay, so temperature will be along the y axis, and along x axis we will have time, that is this is your 1 minute, 2, 3, 4, 5, like this, 6, 7, 8, 9 and 10। Okay, so first of all we will plot the values of the cold water recorded in the table। So let us suppose that after 1 minute this is the temperature of your cold water, then after 2 minutes this is the temperature, after 3 minutes, 4 minutes and after 5 minutes। ये टेम्परेचर्स आ गए किसके, कोल्ड वाटर के, एंड वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। हम इस तरह से स्केल के माध्यम से इसको जोड़ लेंगे। समझ रहे हैं? लाइकवाइज वी विल प्लॉट द टेम्परेचर्स ऑफ हॉट वाटर ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हॉट वाटर का टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा कोल्ड वाटर से, तो let us suppose that after 1 minute this is the temperature of your hot water। Okay, after 2 minutes this is the temperature of hot water, and then after 3 minutes, then 4 minutes, and then after 5 minutes, and we will again join these points with the help of a scale। Likewise we will plot the temperatures of mixture against time। So the first reading of the mixture is after 6 minutes। So this is the temperature, of the mixture after 6 minutes, and likewise 7 minutes, 8 minutes, 9 and 10, and we will again join these points with the help of a scale like this। So now we have plotted the temperatures versus time graph। Now what we do, we draw a vertical line for the time of mixing on this graph। इस ग्राफ के ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर द टाइम ऑफ मिक्सिंग। जिस टाइम पे हमने उसको मिक्स किया, देखिए व्हाट वी डिड, वी मेजर्ड द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर आफ्टर एवरी मिनट फॉर 5 मिनट्स। हमने हर एक मिनट के बाद मतलब 5 मिनट तक हॉट वाटर का टेम्परेचर मेज़र किया, 5 मिनट तक। फिर स्टॉप वॉच को बंद नहीं किया, स्टॉप वॉच चलती रही। फिर 5 मिनट जैसे ही हुए हॉट वाटर के टेम्परेचर को नोट करते हुए हमने हॉट वाटर को मिक्स कर दिया, किस में, कोल्ड वाटर में। और उस मिक्सिंग में मानिए हमें आधा
मिनट लग गया, 30 सेकंड लग गए, जो उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ मिक्सिंग। तो जो मिक्स हुआ वो हुआ आपका 5.5 मिनट्स पे हुआ मिक्स, कौन, हॉट एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आफ्टर 5 मिनट्स, मैं सपोज कर रहा हूँ, हम नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्टॉप वॉच दैट हाउ मच टाइम हैज़ बीन टेकन फॉर द मिक्सिंग, कि कितना टाइम लगा मिक्सिंग के लिए। तो यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ कि कितना टाइम लग गया, 30 सेकेंड लग गए मिक्स होने में। तो जो टाइम ऑफ मिक्सिंग की लाइन मैं ड्रॉ करूँगा, वर्टिकल लाइन, दैट लाइन विल बी ड्रॉन एट 5.5 मिनट्स। तो ये एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाएगी। ओके, देन नाउ व्हाट वी डू, वी विल एक्सट्रापोलेट, देखिए वी विल एक्सट्रापोलेट दिस ग्राफ्स टू दिस लाइन। जैसे ये हमारा कोल्ड वाटर का ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा हॉट वाटर का ग्राफ है, और ये हमारा मिक्सचर का ग्राफ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कोल्ड वाटर का ग्राफ होगा उसमें यहाँ पे स्केल रखेंगे इस तरह से, एंड वी विल एक्स्ट्रापोलेट, हम बढ़ाएंगे इस ग्राफ को, कहाँ, इस तरह से हम इस ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ पर ये ग्राफ इस वर्टिकल लाइन को टच करता है, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ मिक्सिंग, जहाँ इस वर्टिकल लाइन को टच करेगा, ये टेम्परेचर आएगा किसका, कोल्ड वाटर का, एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। और इस टेम्परेचर को हम यहाँ से नोट कर लेंगे, यहाँ से आप एक लाइन लाइए, स्केल रखिए, और जहाँ ये आपके वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये आपका टेम्परेचर होगा किसका, कोल्ड वाटर का। तो ये हमारा होगा T1, तो इसको हम बोलेंगे T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब लाइकवाइज जो हमारा ग्राफ है, जो हमारी लाइन है फॉर द हॉट वाटर, उसको भी हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, उसको भी हम बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल टू दिस लाइन। ठीक है, और जहाँ ये टच किया उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ से क्या नोट कर लेंगे, यहाँ से इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे ग्राफ से, स्केल से, जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, एंड दैट टेम्परेचर विल बी योर T2 डिग्री Celsius, that is temperature of the hot water at the time of mixing. And likewise we will extrapolate the graph of mixture also, and we will read its temperature from the graph like this as I explained, and that temperature will be equal to T3 degree Celsius. Understanding? तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, हॉट वाटर का टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ योर मिक्सचर हम नोट कर सकते हैं विद बाय दिस ग्राफिकल मेथड। सो दिस वाज द अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू डिटरमिन these वेरियस टेम्परेचर्स। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस experiments. So let us start observations. In observation we have volume of cold water taken, volume of cold water taken, and it is equal to 50 ml. Then weight of cold water, taken will be equal to 50 gram. So here I am taking the density of water is equal to 1 gram per ml. मतलब वाटर का जो 1 ml का वेट है वो कितना लिया, 1 ग्राम लिया, तो 50 ml का वेट कितना होगा, 50 ग्राम होगा। ओके, लाइकवाइज वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर, it will be equal to again 50 ml. Then weight of hot water, 50 gram, as I said, density of water 1 gram per ml. Then temperature of your cold water is equal to T1 degree Celsius. Then temperature of
hot water is equal to T2 degree Celsius, and temperature of the mixture it is equal to T3 degree Celsius. So these are the observations of this experiment. Now let us discuss the general calculations of this reaction. ठीक है. So first of all, let us calculate the fall in the temperature of let us calculate the rise in the temperature of cold water. That is, rise in the temperature of cold water. देखिए, जो कोल्ड वाटर है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1 डिग्री सेल्सियस. ओके, और जब हमने उसमें हॉट वाटर मिक्स किया तो जो फाइनल टेम्परेचर हुआ कोल्ड वाटर का वो हुआ आपका T3 डिग्री सेल्सियस. ऑब्वियसली T3 degree Celsius will be more than T1. So what will be the rise in temperature of the your cold water? It will be equal to T3 minus T1 degree Celsius. Okay. Then fall in temperature of temperature of hot water. Okay, so initial temperature of hot water was equal to T2, and when I mixed it with cold water, then the final temperature is T3. And obviously when the cold water has been mixed with your hot water, its temperature will decrease. This means that T3 will be less than T2. T3 कम होगा T2 से. ठीक है, तो hot water के temperature में कितना fall आया? Then the fall in the hot water temperature is equal to T2 minus T3 degree Celsius. Okay, here I want to tell you that the temperature of the calorimeter will also increase. So here the increase in the temperature of the calorimeter will be equal to the increase in the temperature of cold water. जितना राइज कोल्ड वाटर के टेम्परेचर में हुआ है उतना ही राइज होगा किसके टेम्परेचर में, कोल्ड जो आपका कैलोरीमीटर है उसके टेम्परेचर में भी. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि rise in temperature of calorimeter. तो वो भी उतना ही आएगा जितना कोल्ड वाटर के टेम्परेचर में राइज हुआ है. तो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि इनिशियल टेम्परेचर जो कॉपर वेसल है उसका भी कितना था, T1 था, और उसमें जो वाटर था उसके बराबर. और जब हमने इसमें हॉट वाटर मिक्स किया तो इसका टेम्परेचर भी फाइनल कितना हुआ, T3 हुआ. तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर दैट विल बी इक्वल टू T3 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस. ठीक हो गया. नाउ वी विल कैलकुलेट द हीट गेन्ड बाय द योर कोल्ड वाटर. देखिए, अब कोल्ड वाटर हीट गेन करेगा, किससे करेगा हीट गेन, हॉट वाटर से. सो हियर आई एम कैलकुलेटिंग द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड वाटर. बट बिफोर दैट वी नो दैट specific heat of water is equal to 4.184 joule per gram per degree. ओके, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है आपकी 4.184 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. दिस इज द स्पेसिफिक हीट. नाउ द हीट गेन्ड बाय cold water will be equal to the mass of the cold water, that is 50 into specific heat 4.184 into rise in temperature. तो कितना राइज होता टेम्परेचर, T3 माइनस
T1 degree Celsius. So this is the heat gained by the cold water. Let us understand this relation. देखिए, specific heat of water is equal to 4.184. This means that if we want to increase the temperature of 1 gram of water, through 1 degree Celsius, then the heat required is 1.84. Okay, and if I want to increase the temperature of 50 gram of water through 1 degree Celsius, then the heat required will be equal to 50 into 4.184. Now I want to increase the temperature of 50 gram of water through T3 minus T1 degree Celsius, then the heat required will be equal to 50 into 4.184 into T3 minus T1. Okay, in this way we can understand this relation. So the heat gained is equal to mass into specific heat into rise in temperature. Okay, so in this way we have calculated the heat gained by the calorimeter. Now friends, the heat lost by the hot water will also be gained by your calorimeter. जो हीट लूज करेगा हॉट वाटर, एक तो वो हीट कौन गेन करेगा, कोल्ड वाटर गेन करेगा, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया आपके सामने, ठीक है, और उस हीट को कैलोरीमीटर भी गेन करेगा. तो यहाँ पर अब हम नोट करेंगे हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एज आई डिस्कस्ड दैट वी कैलकुलेट द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर. हम कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट निकालते हैं और वो पानी का वो वेट होता है जो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करता है जितना कौन करता है, कैलोरीमीटर. समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट अस सपोज दैट W, capital W is the water equivalent of the given calorimeter. मतलब W जो है पानी का वो वेट है which absorbs the same amount of heat as absorbed by the calorimeter. Now I can calculate the heat gained by the calorimeter. So the heat gained by the calorimeter will be equal to mass into rise in into specific heat of water into rise in temperature. So the weight is W gram into specific heat is 4.184, and as I explained earlier, the rise in temperature of the calorimeter will be equal to T3 minus T1 degree Celsius. So this is the heat gained, okay, heat gained by the calorimeter, and we have expressed it in terms of the water equivalent. Now the total heat gained is equal to total heat gained, it will be equal to, that is heat gained by cold water plus heat gained by the calorimeter, and it will be equal to heat gained by cold water was equal to 50 into 4.184 into T3 minus T1 plus heat gained by the calorimeter is equal to W into 4.184 into T3 minus T1. Okay, now these two terms are common, then we will have heat gained is equal to 50 plus W into 4.184 into T3 minus T1 joules. Okay, so this is the total heat gained.
Now we will measure or we will calculate the heat lost by the hot water. Now heat lost by the hot water. और ये कितना होगा? It will be equal to mass into specific heat into fall in temperature, that is T2 minus T3. Okay, now let us understand it. As I told you that if I want to increase the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius, then heat required is 4.184 joule. अगर हम 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? 4.184. ठीक है, लेकिन अगर वही पानी या उसी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, वो पानी ठंडा हो जाता है by 1 degree Celsius, then the same amount of heat will be given out by that water. तो इतनी ही हीट वो वाटर क्या करेगा? लूज करेगा. जितना 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में लगती है, एब्जॉर्ब करता है, उतना ही हीट रिलीज करेगा जब 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर फॉल करेगा. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर फॉल करता है 1 डिग्री सेल्सियस से, तब वो कितनी हीट रिलीज करेगा, लूज करेगा? 4.184 जूल. फिर लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट एज आई डिस्कस्ड, दैट इज फॉर 50 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से लूज होता है तो कितना हीट वो लूज करेगा? 50 इंटू 184. ओके, और यही 50 ग्राम वाटर अगर कितना टेम्परेचर लूज करता है? T2 माइनस T3 इतना फॉल करता है उसका टेम्परेचर, तो वो कितनी हीट लूज करेगा? 40 इंटू 184 इंटू T2 minus T3. So this means that heat lost is also equal to mass into specific heat into fall in temperature. समझ आया? तो this is the heat lost by the hot water. ठीक है. Now according to the principle of calorimetry, heat gained is equal to heat lost. ठीक है, ये प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का कि जितनी हीट हॉट वाटर लूज करेगा उतनी हीट गेन करेंगे कौन? आपका कोल्ड वाटर और कैलोरीमीटर. तो टोटल हीट गेन्ड विल बी इक्वल टू टोटल हीट लॉस्ट. सो नाउ लेट अस put the values. The total heat gained was equal to 50 plus W, okay, into 4.184 into T3 minus T1, and this was the total heat gained. And as I calculated, total heat lost by the hot water, it was equal to 50 into 4.184, okay, into fall in temperature, that is T2 minus T3. Now 4.184 and 4.184 will cancel each other, and we will be left with 50 plus W into T3 minus T1 is equal to 50 into T2 minus T3. Then we will have 50 plus W, it will be equal to, we will take it to other sides, that is 50 into T2 minus T3 divided by T3 minus T1, okay, and then W will be equal to 50 into T2 minus T3
divided by T3 minus T1 minus 50. Okay, and this is the required relationship for the water equivalent, and the units will be grams. So this is how we will calculate the water equivalent of the given calorimeter. The amount of water in grams which absorbs the same amount of heat as absorbed by the calorimeter and its contents. Now we have to take certain precautions also during this experiment. So precautions are, first is we have to use 1/10 thermometer. Okay, हम लोग 1/10 thermometer ही इस्तेमाल करेंगे. Second precaution is that your thermometer or the bulb of the thermometer, bulb containing mercury, the bulb of the thermometer must not touch the bottom of the calorimeter. जब उसको इंसर्ट करेंगे थर्मोमीटर को तो उसका बल्ब जो है वो कॉपर वेसल की बॉटम को टच नहीं करना चाहिए. And the third precaution is that the mixing should be proper. We should mix properly the hot water into cold water before noting the temperature of mixture. So these were the various precautions which we have to observe during this experiment. So this is all about the determination of the water equivalent of the given calorimeter. And in my upcoming videos, I am going to discuss the determination of heat of solution and heat of neutralization calorimetrically. So keep watching my videos, like and share my videos, and subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice time.